Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers on which you can call us are 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस रवि से। Government sanctions more than 25,586 crore rupees under the Stand Up India scheme in 5 years. Country's exports of engineering goods shoots up 70.3% in March. And foreign funds invest 17,304 crore rupees in the domestic stock markets in March. सरकार ने 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 25,586 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की। मार्च में देश से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 70.3% बढ़ा और विदेशी निवेशकों ने मार्च में देश के शेयर बाजार में 17,304 करोड़ रुपए निवेश किए। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि को 1,14,322 खातों में जमा कराया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को बैंकों की शाखाओं से ऋण दिया जाता है, जिससे उन्हें अपना उद्यम लगाने में सहायता मिलती है। And the first caller today is from Mumbai. Neeraj is online with us. Neeraj, welcome to Market Mantra. Neeraj, you're live with us. Please go ahead and put your question. Yeah, my question to Mr. Dhirendra is regarding Nippon Tax Saver Fund. I have some investments made 5-6 years back. You know, I used to invest amount for ATC deduction, lump sum amount of 1,50,000 every year. Yeah. Now that fund had not been performing since the past couple of years. Now I see again it has started performing. So should I stay invested or should I exit? And secondly, my question was on I have certain investments in DHFL bonds. Now, the thing has gone under NCLT, so I just wanted to know how to... Hello? Yeah, I think we've lost Neeraj. So he has two questions. One is about Nippon Tax Saver. Yeah, Nippon Tax Saver. Yes, this was a struggling fund and it has done exceptionally well in recent times. In fact, last 1 year return, last 1 year it is up 72%. Despite that, you know, if he has been investing, if he invested 5 years ago, still it does not translate into a very substantial return, but, you know, he has been able to recover a good part of the opportunity loss with this substantial, you know, with this significant comeback. And I think the way the market is, you know, different parts of the market, you know, is cyclical. Something does well at some point and something doesn't do well. And during this period, in the last 4 or 5 years, the fund has also reconfigured itself quite substantially. It was, you know, initial years, it did very well, and that is why a lot of investors came in when it was driven by, you know, smaller companies, mid-sized companies. And now the complexion has changed quite substantially. So I would say that it has changed for good, and this fund still has some promise. But I would say that this fund is a good combination of, you know, growth stock as well as, you know, value stock, something which is driving its performance. So I see that the sustenance of this performance might prevail for a while, and recent good performance, this might linger for some more time. And his other question was about the DHFL bonds which are under NCLT right now.
Yeah, we have to see because, NCLT, the resolution is that the equity holders will have been, there's not much in for them. And we have to see the final resolution. It has taken very long. And we have to see what happens to the bonds. I think, there might be some residual value, but may not be substantial. मुंबई से हसमुख हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yeah, good evening, sir. Good evening. My question is that I am a long-term investor and I wanted to invest in a mutual fund with tax-saving benefit under Section 80C. So can you name me some of the tax-saving instruments which will give me better returns for next 5 years horizon? Thank you. Yeah, quite a good number of, tax-saving fund. But if I have to list, 4 or 5 of them for you, I would say Aditya Birla Sun Life Tax Relief or, Axis Long-Term Equity, or Invesco India Tax and Mirai Asset Tax Saver. These are my choicest funds. But, there are other funds which do well. And I would say that investing in tax saving fund, look for 5 years and more. 5 years is at least the minimum period you should get, though the minimum lock-in period is 5 years. But think long when investing in equity and think in terms of, carrying on with these investments beyond the stipulated lock-in or 5 years. If somebody is, barely able to invest something like 1.5 lakh rupees in a year, which is 12,500 rupees a month, and you are unable to save anything more, then I think, if somebody does it for 10, 15, 20 years, this will translate into a very meaningful and sizable retirement corpus for anyone. And if you're unable to save anything more, there can't be any better avenue than investing in a disciplined manner with an equity vehicle like this. BB Narula from Gurgaon has joined us. Narula sir, welcome to Market Mantra. Please put your question. Yeah, good evening. My question, last time also I had raised the same question, but the time was almost over. And this is regarding the Reliance MIP fund which I had taken in 2015. Which got converted to Nippon Hybrid Growth Fund. And it also got segregated into 3 parts, segregated portfolio 1, 2 and the main portfolio. Now, I had been given 24,000 which has been put in short-term gains. I do not know, after investing in 2015, and in one portfolio where they've given 24,000 rupees, this has gone into short-term gains. Okay. I'll explain you the mechanism of Number this. 2 was that if I redeem the entire fund, so will I get the segregated portfolio 2 proceeds or not? Yes. First question that, your second question, which is important, and I recall answering that even last time and once again. That was the purpose of creating a segregated portfolio. That even if you take your money out, which is liquid, the fund which has not been segregated, and you are getting your daily NAV of that part, your original investment, without the segregation, you can take it out anytime, and you will still be entitled for the segregated portfolio. This was the objective why these segregated portfolios were created. That investors who move out, and if a fund is facing a difficulty in recovering the money, so it is your entitlement, and you don't lose that entitlement. Whenever they are able to recover, it might take longer, and it may not be all, but whatever they are able to realize, you will be entitled to it, even if you get out of this fund, get out of the main fund. And the other is that, the short-term capital gain that you are witnessing in the capital gain statement, it actually offsets in a certain way, because if you sell the remaining investment, you will have, that much of, because the capital gain is calculated based on the issuance, the date of issue of those units, and your segregated portfolio units were created within, and in case of a fund like MIP, the holding period must be 3 years for it to be treated as long-term capital gains. Any period less than 3 years is treated as short-term. And if these units were created in less than 3 year period, in case of an equity fund, if it is less than 1 year period, and that money was realized, it will be treated as short-term capital gain. But, it is able to offset the long-term gains which you will otherwise have in your main fund, because that money is actually carved out from here, and
your main fund will have as much of capital loss as well. अगले कॉलर हैं मुंबई से डायसन हमारे साथ। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर मेरे को 2 सवाल पूछने हैं सर से। एक तो सब लोग ऐसा कह रहे हैं आजकल कि एक्टिव वर्सेस पैसिव, अभी पैसिव ज्यादा आगे चल के काम करेगा, तो ये सही है क्या? सर का इसके ऊपर ओपिनियन चाहिए। और दूसरा मतलब ESG जो थीम है उसके अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? दोनों भी लॉन्ग टाइम के लिए है, तो इसके ऊपर आपका सर का व्यू। जी हाँ, जो पैसिव है उसका रेलेवेंस थोड़ा बढ़ गया है बहुत। 1-2 साल पहले, 3 साल पहले एक्टिव फंड्स का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था और इंडेक्स फंड का प्रदर्शन उतना मजबूत, उतना बढ़िया नहीं होता था। पर पिछले 2-3 साल में इनका केस काफी स्ट्रांग हुआ है। इनका केस स्ट्रांग होने का के 2 कारण है। एक तो कि इंडेक्स फंड्स में बहुत पैसा लगातार आ रहा है। हमारे यहाँ देश में भी इन्वेस्टर्स हैं जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन NPS, इनका पैसा इंडेक्स स्टॉक्स में लग रहा है और लगातार आता जा रहा है और इससे निकलता नहीं है। ये जो पैसा आने वाला पैसा है वो रिडीम नहीं होता है, तो ये पैसा केवल लग रहा है जिसकी वजह से इंडेक्स स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा कि और चूंकि ये बढ़ रहा है और एक्टिव मैनेज फंड का प्रदर्शन कमजोर है और बाजार के उतार चढ़ाव में वो ठीक से विथस्टैंड नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा जो लार्ज कंपनियों का, जो बड़ी कंपनियों का जो यूनिवर्स है वो बहुत ही नैरो तरीके से ये बाजार को ड्राइव कर रहा है। इस वजह से जो मिड कैप और स्मॉल कैप हिस्टोरिकली हमारे एक्टिव मैनेज फंड के परफॉर्मेंस को ड्राइव करते थे, वहां बड़ा उनका केस थोड़ा वीक हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि लार्ज कैप फंड की तुलना में और बड़े स्टॉक्स में लगाने वाले फंड की तुलना में एक्टिव फंड्स का एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड हुआ है। उसका एक तीसरा कारण है कि उनके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। जो सबसे बड़ा ओपन फंड है उसका 10 बेसिस पॉइंट पे आप खरीद पाते हैं, और तो अगर एक दूसरा फंड अगर 1.25% ज्यादा अच्छा करेगा तो केवल एक्सपेंस की वजह से 1.5-2% ज्यादा करने के बावजूद वो एक इंडेक्स फंड के प्रदर्शन को मैच कर पाएगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड का केस थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन 2-4-5 साल में ये पता चल पाएगा कि सचमुच में ये स्ट्रांग हुआ है, सस्टेनेबल तरीके से हुआ है। क्योंकि जब से ये अच्छा प्रदर्शन इंडेक्स फंड का देखा जा रहा है तब से बाजार में बहुत उथल पुथल है। Ratnakar, a regular caller from Mumbai, is online with us. Ratnakar, welcome to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि 3 साल पहले मैंने ELSS में SIP चालू किया था और ये मार्च में खत्म हो गया, वो 3 साल हो गए। तभी उसका जो रिडम्पशन है वो कैसा मिलेगा, कि एक साथ सभी मिलेंगे कि कैसे मिलेंगे, ये एक सवाल है। और तो दूसरा सवाल है कि आगे में SIP चालू करना उचित रहेगा नेक्स्ट 3 साल के लिए, कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का कर सकता। आपका मंथली SIP है रत्नाकर? जी, ओके, ऐसा लग रहा है। वी लॉस्ट। जी हाँ, लग रहा है कि इनका मंथली SIP है और 36 महीने इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इस 36 महीने के SIP को आप समझिए कि 36 इन्वेस्टमेंट है और उनके रेस्पेक्टिव डेट से 3 साल का लॉक इन पीरियड अप्लाई होता है। अगर आप निकालना चाहें तो आज आप सबसे पुराना वाला इन्वेस्टमेंट, पहले महीने का इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि उनके 3 महीने, उनके 36 महीने नहीं हुए हैं। और इसको एवरेज जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा हो तो भले ही लगा दीजिए, लेकिन एवरेज करने से एक फायदा होता है कि कुछ आप सस्ता खरीद पाते हैं, कुछ और महंगा खरीद पाते हैं। लेकिन निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ा एंग्जाइटी का रीजन होता है कि आपने पैसा लगाया और उसके बाद बाजार गिर गया तो बड़ा अफसोस होता है, उससे आप बच पाएंगे। तो इनकी जो आखिरी किस्त है जो अभी हुई है, इसको 3 साल के बाद ही निकाल पाएंगे? जी हाँ, इस 36 महीने के SIP को टैक्स सेविंग फंड में आप 36 इन्वेस्टमेंट समझिए। ग्रेटर नोएडा से SPS जैन हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। ये अब ये गोल्ड के रेट्स काफी डाउन है, तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, कितना परसेंटेज कुछ पैसा इसमें गोल्ड ETF में लगाया जाए या फिर गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स लिए जाएं, हालांकि उसका लॉकिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। प्लीज गिव योर रिकमेंडेशंस। मेरा सोने में बड़ा कम विश्वास है। मुझे लगता है रियल एसेट तो इक्विटी और डेट ही है, और काफी हद तक मकान भी है अपना, जिससे कि किराया बचता है और उसका कई बार और आपको इमोशनल कंफर्ट भी मिलता है कि आपने लिया है। सोने का दाम जरूर कम हुआ है और यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव देखा गया। पिछले 3 महीने में सोने का दाम करीब 11% कम हुआ है।
और 1 साल का रिटर्न करीब 1% ही रह गया है। लेकिन अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो 12% है और 5-10 साल का रिटर्न देखें तो 6%। ये कोई खास रिटर्न नहीं है। तो सोने में काफी उतार चढ़ाव देखा जाएगा। एक छोटा सा आपका एलोकेशन होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीटली अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो इक्विटी और डेट से। और सोने का दाम, सोना बड़ा फैंसी एक एसेट क्लास होता है जब इक्विटी और डेट दोनों में हाहाकार मचा हो, और उसकी मुझे लगातार उम्मीद नहीं है कि वैसा मचा रहेगा। तो कुछ आपका एलोकेशन होना चाहिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन विकल्प है। बाकी जितना जो भी और सोने का विकल्प है, ओन करने का विकल्प है, उसमें कुछ खर्चा लगता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको सोने का दाम प्लस 2.5% आपको रिटर्न मिलता है और वो टैक्स फ्री है अगर आप पूरे पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। तो आपका लंबे समय का अगर एक स्टेबिलिटी, पोर्टफोलियो की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए एलोकेशन होना चाहिए तो उसमें होना चाहिए। Nishant from Ranchi is online with us. Nishant, welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Market Mantra. Good evening. This is regarding, I just wanted two suggestions. One is regarding international funds like Nasdaq 100 of Motilal Oswal, or any other fund which Dhirendra ji will suggest. And the other one is, I want one suggestion on diversified equity large cap fund for my regular SIP. Okay. Among the international funds, there are very few funds which we like, because many international funds, they do well over some period of time, but doing it in a sustainable way. I have great appreciation for Nasdaq 100, Motilal Oswal's Nasdaq 100, and there is one more alternative which has come up, but this fund is a good enough fund. And particularly after this, the launch of the fund of fund, which makes it easier for investors to buy with ease. It has turned out to be a decent, a good alternative. Also, I feel that, the narrowness of the fund, which is, it is a very tech-heavy portfolio, but it's still a very promising portfolio because that is the kind of stocks, the underlying portfolio which Indian investors don't have access to. And the other fund which I like is the Franklin India Feeder US Opportunity Fund, and there are two more funds of similar kind with returns in the similar range. Offered by ICICI Prudential and DSP BlackRock, DSP as well. But that's about it. These 4 funds you can choose. गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, Market Mantra team. So my question is, can we buy blue chip ETF or banking and finance ETF or FMCG ETF via mutual fund, or we have to buy it through Demat account only? ये दोनों में खरीद सकते हैं। और दूसरा सवाल सर, क्या अभी मार्केट में डिप मिलेंगे और इन्वेस्ट करने के लिए एक रेगुलर इन्वेस्टर को SIP वाले या जो शॉर्ट में करते हैं, आपका क्या ख्याल है सर? थैंक यू। ETF खरीदने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर से अकाउंट खोल करके उस ETF को बिल्कुल जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे खरीदना होगा। और कुछ पॉपुलर ETF हैं जिनके ऊपर एक और एक्स्ट्रा फंड ऑफ फंड माउंटेड है। बहुत सारे निवेशक ETF नहीं खरीद पाते हैं या खरीद पाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए वो फंड ऑफ फंड, जैसे कि Nasdaq 100 मैं बता रहा था मोतीलाल ओसवाल का, तो उसका एक फंड ऑफ फंड भी एक ओवरले है। बहुत सारे गोल्ड फंड का भी, गोल्ड ETF का भी एक फंड ऑफ फंड है जिसमें कि आप गोल्ड फंड में पैसा लगाते हैं और वो फंड गोल्ड ETF में लग जाता है। लेकिन उसका खर्चा है, उसका एक एडिशनल खर्चा है। और अगर आप बाजार में सीधा लगाएं पैसा तो वो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा या ब्रोकरेज नहीं देना पड़े, तो बाकी जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड चीज है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड एक अलग सुविधा से खरीदते हैं, दिन के दाम के आखिरी दाम के आधार पर आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। जब आप ETF खरीदने जाते हैं तो दिन में किस दाम पे आप खरीद रहे हैं इस पे काफी निर्भर करता है, और हमेशा NAV पे आप नहीं खरीद पाते। कई बार म्यूचुअल फंड ETF का दाम NAV से ऊपर या नीचे होता है थोड़ा, तो यही तरीका है खरीदने का। Before we take our next caller, let's look at the second story that we are covering in this edition. Exports of engineering goods from the country recorded an impressive 70.3% growth in March. The country's total merchandise exports during this period was $34 billion as compared to $21.5 billion in March 2020, registering a huge growth of over 58%. The monthly growth is the best ever performance so far. The sudden jump in exports offers hope of a sustained growth in the sector in the coming months. And our next caller is Rajesh from Hyderabad.
Rajesh, welcome to Market Month. मुझे एक म्यूचुअल फंड सजेशन चाहिए जो कि पावर सेक्टर में, मेटल सेक्टर में और सोलर एनर्जी और सीमेंट सेक्टर में का उनका शेयर होल्ड करता है। ऐसा म्यूचुअल फंड मुझे सजेस्ट कीजिए जिसमें मुझे एसआईपी करना है। थैंक यू। एक फंड है जो कि पावर सेक्टर में पैसा लगाता है और लेकिन पावर और मेटल दोनों में लगाता हुआ ऐसा कोई फंड नहीं है। And you wanted solar and cement as well? No, there is no fund which actually combines in such unique way, but there is a fund which invests in power sector companies. Probably that's a product idea for bespoke mutual fund portfolio in the future. No, but that is what people. That is why their stock market is there, and people can build their own portfolio of their liking. And Dhirendra, the earlier caller who had asked about international funds, he had also asked for a recommendation for diversified equity large cap fund for SIP. Okay, as I was saying in the context, if I have to list some, I actually find great difficulty in finding companies which are diversified and investing in large cap. But if I have to list some, I would say Axis Blue Chip and Mirae Asset Large Cap. These and SBI Blue Chip. These are three large cap funds of my liking. But as I said earlier that, the case for index fund has become stronger vis-a-vis large caps simply because of expense. These funds, they have to beat the index by 1.5% to match the index, and then they have to generate more returns. So, these are three funds which have been able to generate some alpha over a longer period of time, but not at all. So if somebody chooses an index fund, should he go for the Sensex one or the Nifty one? Either way, the difference over a longer period of time, there isn't much of a difference given that, there is a substantial overlap, even in the constituents. But I would say that the Nifty index is more liquid, and from a purchase dynamics point of view, I think it's more convenient and more efficient market prevalent for that. दिल्ली से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरा सवाल ये है कि जैसा हम इक्विटी का जब खरीदते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट फीड कर सकते हैं, अगर वो रेट टच होता है तो इक्विटी परचेज हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। तो ऐसा सिस्टम म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं है कि हम एक रेट डाल दें, अगर वो रेट टच हो जाए तो ले लिया जाए? क्यों ऐसा एक ओपेक सिस्टम है कि हमको मार्केट के एंड तक वेट करना पड़ता है कि हमको नहीं मालूम कि मार्केट गिरेगा कि उठेगा और उसी समय म्यूचुअल फंड परचेज किया जाएगा? उसका कारण यह है कि म्यूचुअल फंड का जो आधार है वो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड को ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया है। आप स्टॉक मार्केट में किसी खास स्टॉक शेयर के लिए आप एक लिमिट का प्राइस दे सकते हैं कि ये किसी का दाम अगर 50-55 रुपए चल रहा हो और आप 45 रुपए पे ही खरीदना चाहते हैं तो आप 45 रुपए पे ऑर्डर देते हैं। अगर उस दाम पे आ गया तो मिलेगा, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा उस दिन। म्यूचुअल फंड इस तरह से नहीं होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बनाए जाते हैं जब आप उसका ऑर्डर देते हैं, और ये यूनिट तब बनाए जाते हैं जब आप इस यूनिट के बनाने का जो दाम है वो आज के शाम के दाम के आधार पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि ओपेक सिस्टम है, यही ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हाँ, अगर आप शेयर की तरह आप उस तरह से खरीदना चाहते हैं तो ईटीएफ आप उस तरह से खरीद सकते हैं। अगर आप सेंसेक्स का या निफ्टी का ईटीएफ खरीदना चाहते हैं या कुछ और भी ईटीएफ उपलब्ध है तो उनको आप शेयर की तरह एक लिमिट प्राइस दे सकते हैं। वो दाम जब हिट होगा तब आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। उसको खरीदने का तरीका बिल्कुल शेयर जैसा है। Dhirendra, there were some mutual funds like HDFC which had products like Flex Index where you could set a trigger based on which you could purchase in whatever fund that you had chosen. Would you recommend something like that for Dinesh? No, I don't think they actually became mainstream because, many a times, many funds actually provide a redemption trigger, but not a purchase trigger. And purchase from where? Because you have to keep the money somewhere to be moved there. And given that, the rules of redemption and subsequent investment and the switch has become complex, so those products are no more in vogue. Yes, there are mechanisms whereby the redemption can be automatically triggered depending on your pre-programmed triggers of percentage of return or percentage or achieving a certain value, and it is overlay available. It's a feature available on many funds. Before we'll take the next caller, let's look at the third news item that we're covering in this edition. For the third consecutive month,
foreign portfolio investors have invested 17,304 crore rupees in domestic stock markets in March. According to depositories data, foreign portfolio investors invested 10,482 crore rupees in equities and 6,822 crore rupees in the debt segment between March 1st and 31st. The total net investment stood at 17,304 crore rupees during the period under review. Previously, overseas investors had invested 23,663 crore rupees in the domestic markets in February and 14,649 crore rupees in January on a net basis. मुंबई से श्री मखीजा हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछें अपना। अच्छा, ये मैं सर नमस्कार सबको। नमस्कार। कोटक का जो नया फंड लॉन्च हुआ था, फंड ऑफ फंड नैस्डैक, वो 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी वो 2 महीना पहले, तो अभी उसका एनएवी कुछ 9.4 हो गया है। इस फंड के मुकाबले में जो दूसरे फंड है मोतीलाल के, तो यू सजेस्ट दैट वी शुड कंटिन्यू इन दिस। मैंने तो इसमें 10,000 पर मंथ का SIP कर दिया था, सिंस इट वाज अ न्यू फंड। जी नहीं, नए फंड और पुराने फंड की वजह से आपको अपने फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल और इस फंड में के रिटर्न में कोई खास अंतर नहीं है। केवल इसकी शुरुआत 10 रुपए पे हुई थी। अगर उस दिन आपने 10,000 रुपया मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 में भी लगाया होता, तो उसकी भी स्थिति यही होती। जो 9 रुपए 80 पैसे है या जो भी है, 2% की कमी आई है, वो वहां पे भी आई होती। केवल अंतर यह है कि उस फंड का एनएवी ज्यादा है क्योंकि वो पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वहां प्रतिशत रिटर्न आपके इस फंड में या उस फंड में बराबर ही रहा होगा, करीब करीब बराबर रहा होगा, बहुत मामूली सा अंतर रहा होगा। तो आप इस SIP को जिस उम्मीद से आपने शुरू किया है, इसको 2-3 साल चलाइए। ये अच्छा फंड है और ये अक्सर हुआ करता है कि आपने निवेश शुरू किया और बाजार में गिरावट आए। तो ये कोई भी इक्विटी निवेश आपका थोड़ा उसको समय देना चाहिए, उसके प्रदर्शन के लिए। राइट। एंड लास्ट कॉलर फॉर द डे विल बी अरुण फ्रॉम दिल्ली। अरुण, क्विकली पुट योर क्वेश्चन प्लीज। I just wanted to know my priorities to pay the housing loan or to invest in a mutual fund of the surplus money which I have. I think, most of my default answer is that always never borrow or, get rid of your loan. But this is the only loan which one should carry on. But look at it. If you are uncertain about your career or, you are in a job about which there is some uncertainty and it will give you comfort, then maybe prepay it. Otherwise, this is the only loan which is justified, because over a longer period of time, the return that you generate on your equity investment, methodically, is bound to be lower than the return, the interest that you will incur on a home loan. And he should probably, Dhirendra, also look at the rate. He might have borrowed at a higher rate, probably 8-9%. Yeah, now of course, the rates optimizing your return, or reducing the cost of your borrowing is important. But still, my hope is that 10 to 15 years of borrowing, SIP, as compared to borrowing on a home loan, and over and above that, if you are able to save on taxes and save on the rent, it turns out to be a decent. जी धीरेन्द्र, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dhirendra. Before we close, a reminder of the headlines. Government sanctions more than 25,586 crore rupees under Stand Up India scheme in 5 years. Country's exports of engineering goods shoots up 70.3% in March. And foreign funds invest 17,304 crore rupees in the domestic stock markets in March. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.